once again come back in इरा सेशन नंबर 9। अब तक हमने इरा के सेशन नंबर 1 से लेकर 8 तक के इरा सेशन के आंसर शीट हमने देखी थी। तो आज हम चलो देखते हैं सेशन नंबर 9 के नॉलेज चेक टेस्ट एंड उसके बारे में। तो सेशन नंबर 9 के नॉलेज चेक टेस्ट के 1 के बारे में क्वेश्चन नंबर 1, सुमित हैज रिटर्न टू शॉर्ट paragraphs about types of pollution in one page. He wants to arrange these two paragraphs side by side like a newspaper format so that both are visible in two vertical page parts. Which option should Sumit use from the page setup group? तो इसका आंसर है columns and two columns. Next question. Raghav is typing a formal letter on a A4 size page to send to a government department. He wants to leave more blank space on the left side of the page to allow space for punching holes and binding the file later. Which option in the page setup group should Raghav use to increase the blank space on the left? इसका आंसर है मार्जिन। तो ये हो गया नॉलेज चेक टेस्ट 1 का क्वेश्चन आंसर। अभी सेशन नंबर 9 का ही नॉलेज चेक टेस्ट 2 के बारे में हम देखेंगे। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज पेज साइज फॉर रेगुलर डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग? सो हम A4 साइज नॉर्मली यूज करते हैं, तो इसका आंसर है A4। क्वेश्चन नंबर 2, आशीष is working on a document where is chapter 1 ends halfway on the page, but he wants chapter 2 begin on a new page, keeping both sections separated. Which choice under the layout breaks menu would achieve this formatting document requirements? इसका आंसर है mark the point at which one page ends and the next page begins. Next question. Take a look at the image. Show when can you do using this option in MS Word? तो ये वाला इमेज, इसका आंसर है एडजस्ट पैराग्राफ indentation and control spacing before and after paragraphs. Next question. You are creating document for the college assignment in Microsoft Word and need to move a new paragraph in Word from the left or right margin. Which of the following images shows the option you would use to do this? आंसर है फर्स्ट इमेज, इसमें का मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया है, ये वाली है। Next question. You have inserted an image into a document and want the surrounding text to flow neatly around it instead of appearing only above and below the image. Which feature from the Arrange group in the Layout tab would you use to control how next wraps around the object? तो इसका आंसर है सी, ट्रैप टेक्स्ट। तो ये था सेशन नंबर 9 का नॉलेज चेक टेस्ट के आंसर शीट्स। अभी सेशन नंबर 9 की नॉलेज चेक टेस्ट के 3 के बारे में हम देखेंगे। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कस्टमाइज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन वर्ड अंडर विच टैब कैन यू फाइंड द फॉन्ट कलर ऑप्शन? तो इसका आंसर है डी, होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, while preparing a report in MS Word online, Meena edits a few sentences. She forgets to click the save button before closing the browser tab. What will happen to her changes? So इसका आंसर है the changes will get saved automatically. Next question, while finalizing a report in MS Word, you are asked to include your office logo that is saved on your computer. Which option under the insert pictures menu would you be the most appropriate to select? तो इसका आंसर है सी, pictures this device. Next question, analyze the design and content of each image carefully and identify which one is a certificate. तो इसका आंसर है ये वाला सेकेंड इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये था सेशन नंबर 9 का नॉलेज चेक टेस्ट 3 के क्वेश्चन आंसर्स। तो अब हम देखेंगे नॉलेज चेक टेस्ट 4 के बारे में। तो उसका फर्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है, हाउ डज पिक्सेल एनहांस सर्च एक्यूरेसी फॉर यूजर्स? इसका आंसर है बाय यूजिंग यूजर बिहेवियर एंड
एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स पिक्सेल्स अ यूनिक एआई पावर्ड सर्च टूल? इसका आंसर है इट कैटेगरीज images using AI driven tagging। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये था नॉलेज चेक टेस्ट 4, उसके 2 ही क्वेश्चन है। अभी नॉलेज चेक टेस्ट 5 देखेंगे। विच मेथड डज IRCTC आस्क दिशा? दिशा ये हमारा एआई टूल है 2.0 यूज टू मिनिमाइज एरर्स व्हेन यूजर्स बुक रेलवे टिकट्स। बी, it validates user inputs during real time conversation। तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why does IRCTC ask Disha 2.0 utilize context aware suggestions during user interactions? इसका आंसर है to improve accuracy and relevance of conversations। तो ये थे नॉलेज चेक टेस्ट के सेशन नंबर 9 के अभी तक के नॉलेज चेक टेस्ट। शायद नॉलेज चेक टेस्ट 5 है इसके अंदर। अब देखते हैं सेशन नंबर 9 सेल पाथ लर्निंग के बारे में। तो अबाउट लेआउट टैब के ऊपर पेज सेटअप ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप्स, अरेंज ग्रुप्स एंड कैप्शन के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन यू सेट पैराग्राफ स्पेसिंग MS वर्ड? तो इसका आंसर है पैराग्राफ स्पेसिंग। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज 2 पेज ओरिएंटेशन ऑप्शंस। इसका आंसर है ट्रू। विच पेपर साइज इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका आंसर है A4। क्वेश्चन नंबर 4, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शंस कम्स अंडर द लेआउट टैब इन MS वर्ड। तो ये हो गया सेल पाथ लर्निंग के क्वेश्चन आंसर्स। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि ईच एंड एवरी सेशन के अंडर द एक सेशन टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं सेशन कंप्लीशन टेस्ट। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, यू वांट टू एक्सप्लेन कुकीज टू योर फ्रेंड, विच एग्जांपल वर्क्स बेस्ट? इसका आंसर है अ टाइनी फाइल दैट रिमेंबर्स यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, you entered wrong password many times and got blocked. Why do websites do this? To prevent hackers from guessing. तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, you received an email that says you own 10 lakh rupees. What is the best step? इसका आंसर है सी, report it as spam or delete it. Next question, a website asks you to allow notifications. What should you do? तो इसका आंसर है बी, allow only if it's a trusted site. Next question, you are creating a blog which feature lets readers move from one section to another easily. Next, इसका आंसर है सी, hyperlink. Next question, your e-commerce order failed but your money got dedicated. What should you check next? इसका आंसर है error code and confirmation email. Next question, you are designing a website for your school. Which domain will build more trust? तो इसका आंसर है www.yourschool.edu. Next question, you want to share a long article with your class group. Which method is better and why? तो इसका आंसर है email it with an attachment. It's structured and shareable. Next question, a shopping website asks you to save your card details. What should you evaluate before clicking save? तो इसका आंसर है ए, whether the site has HTTPS. Next and last question, you and your friend search the same thing online but get different result. Why might that happen? इसका आंसर है बिकॉज अ लोकेशन, हिस्ट्री एंड कुकीज। तो इस तरह से ये था सेशन नंबर 9 नॉलेज चेक टेस्ट। इसके 5 है, सेल्फ पाथ लर्निंग टेस्ट है एंड सेशन कंप्लीशन टेस्ट है। तो यहाँ पर आप देखकर आपके क्वेश्चन आंसर अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, अब तक कि आपके मार्क्स माइनस ना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।